और देश की बात में जाते जाते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के विचार। आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम संदेश देना चाहते हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का हासिल करने का। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन बात कर रहा है हेल्थ और हाइजीन के संबंध के बारे में, और साथ ही साथ कि हाइजीन का क्या रोल होता है एक स्वस्थ भारत की तरफ। इस चर्चा को जारी रखने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ, जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं और फाउंडर हैं बायोकॉन लिमिटेड के, ताकि वो हमें बता सके कि बड़े गैप्स क्या हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में। डॉक्टर शॉ, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आप लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन रीइमेजिनिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम का हिस्सा रही हैं। क्या आप हमें समझा सकती हैं कि भारत में सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए स्वास्थ्य प्रणाली को नए ढंग से ढालने के लिए क्या करना होगा? It is about right to healthcare, it is about access to healthcare, and above all, it is about health equity. Access and affordability are the two pillars of ensuring health equity and right to healthcare. And this is what we're trying to reimagining, saying, how will this work? How do we make sure that every Indian, no matter what their economic strata is, will have access to basic quality healthcare? Starting with, of course, primary healthcare, and of course, then ensuring that if they need secondary and tertiary and quaternary healthcare, it's made available. For a country as large as India, obviously this is a monumental challenge because we have a huge population with a large part of it which is poor. So how do we make this work is really the challenge, and what we are looking at is what is it that we have, what are the big gaps, and how can technology bridge many of these gaps. So there are many pillars that we're looking at. One is, of course, the human resource requirements to deliver health equity. The second one is about the financial outlay that we need to address health equity. The third is how do we use digital technologies and technology in general to deliver health equity. And the fourth is about what is the governance model required to really ensure that everything is connected and everything works. डॉक्टर शॉ, किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में आप पिछले कई दशकों से आगे रही हैं। क्या आपने भारत में इसमें तब्दीली आते देखी है, चाहे वो उद्देश्य के बारे में हो या साझेदारी के सिलसिले में? कितनी तब्दीली आई है? I have personally experienced the power of providing affordable access to life-saving and essential medicines. Let me start with my favorite example of insulin. I remember when we embarked on this journey of developing recombinant human insulin, India was at the epicenter of diabetes. It was importing all its insulin, and 90% of that imported insulin used to be animal insulin because we just couldn't afford recombinant human insulin. Only affluent paying patients could afford recombinant human insulin. And that is what drove me to develop our own indigenous recombinant human insulin, which we launched in 2004. And that was a very pivotal moment for diabetes treatment because we were able to disrupt insulin pricing by bringing down the cost of recombinant human insulin to 1/10 of what it was being sold at. And it also forced the multinational companies who were, pricing insulins beyond the reach of most patients in India to come to this level. Today, we do not import any animal insulins. Everybody can afford recombinant human insulin thanks to our efforts. And today we have the cheapest recombinant human insulin in the world. So I think that's the power of innovation, that's the power of disruption, and that's the power of focusing on affordable, access. डॉक्टर शॉ, फार्मा की बड़ी कंपनियां लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का या सभी के लिए स्वास्थ्य हासिल करने में क्या भूमिका अदा करती हैं?
I think the pharmaceutical industry in India is doing its bit in a very, very commendable manner. I think every medicine that is required by a patient in any disease segment is the most affordable medicine in the world. India is the leader when it comes to generics. We as a company are trying to lead in biosimilars globally. And I think it is these kind of medicines that are bringing down the cost of these very, very important treatments. So I don't think I can think of a better sector than the India's pharmaceutical industry that is not only helping its own country and its own citizens, but it is making a huge difference to global healthcare. डॉक्टर शाह, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के विचार। आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर हम संदेश देना चाहते हैं, लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का हासिल करने का। वर्ल्ड हेल्थ दिन के अवसर पर देश के नागरिकों का मेरी ओर से संदेश है कि हम हेल्थ को हॉलिस्टिकली देखें, हम स्वच्छता के आग्रही रहें, हम पेयजल योजना से मिल रहा शुद्ध जल ग्रहण करें, हम समय समय पर हमारा हेल्थ चेकअप कराते रहें और हमारे में कोई बीमारी पाई जाए तो तुरंत ही हम उसका इलाज करें ताकि उसका संक्रमण भी ना बढ़े और हम भी स्वस्थ रहे। स्वस्थ भारत की मैं वर्ल्ड हेल्थ दिन के अवसर पर अपेक्षा करता हूँ। हमारा भारत स्वस्थ बने, हमारा भारत समृद्ध बने और देश के सभी नागरिकों को हेल्थ एक्सेसिबल हो और हेल्थ अफोर्डेबल हो। इस प्रयास जो मोदी जी कर रहे हैं उसके साथ हम जुड़ें।